I have told you once, few times I have told you. I think from many years, many times I have told that Lahiri Mahasaya is Kriyayoga Avatar, a present ascending Dwapar Yuga. Ascending Dwapar Yuga starts from 1700 AD between 1700 AD to 4100 AD. This is the period of ascending Dwapar. Lahiri Mahasaya teaching is for this ascending Dwapar Yuga, and from this teaching again you will find the same teaching will exist for Treta Yuga, for Satya Yuga. Because Lahiri Mahasaya was in the highest stage of self-realization, his complete existence is fully charged with the complete knowledge. For teaching given by Lahiri Mahasaya is fit for our yugas. Then Lahiri Mahasaya is working like a son of spirituality. S-E-U-N. Who is not able to understand Lahiri Mahasaya and trying to read about Lahiri Mahasaya, maybe through autobiography of Yogi, there are so many ways to listen about Lahiri Mahasaya, to know about Lahiri Mahasaya, about the Kriyayoga teaching from many places, many persons are giving. That teaching is reduced its aura. Suppose that there are 5 persons, A, B, C, D, E, F. Let us have the 6 persons. They are going to know about Lahiri Mahasaya. They are going to practice Kriyayoga meditation. They have learned from here and there, whatever. But complete knowledge of Lahiri Mahasaya's Kriyayoga teaching is not received by any of them. But nature of each and every ego is to dispel the message, to give the message, to deliver the message, means to teach. If all 6 persons will start teaching about Lahiri Mahasaya, about Kriyayoga, there will be 6 sects. This is the way how sectarian religions evolved. Sectarian religions are evolved in this way. Therefore, try to be aware, if I do not accept Lahiri Mahasaya's teaching, but what is Lahiri Mahasaya's teaching? What written holy signs? That Parabram alone exists. Parabram has become your presence. Parabram has become the creations in the cosmos. In the cosmos, whatever imagine, there are many creations, many structures in the form of energy, atom, molecules, plants, animals, a human being. It is Parabram is manifesting in the form of all, tiger and cow. Parabram has become both. Coronavirus who came and we human being. Parabram has become both. Then viruses are creating hell in human life. Therefore, for the logic, we are not able to believe in this, that Parabram has become all in all. It means we are not accepting it because we do not know how to accept it. In order to accept this philosophy, you have to feel your head to toes all the time. Because it is Parabram. Parabram has become head to toe, then how you forget it? In lying position and turning right, left side, supine position,
means lying down on the back, prawn position, lying down on the stomach, or lying on right side, left side. You are moving your leg, whatever you are doing. Now adapting position from lying to sitting, from standing to sitting to standing, from standing to walking, doing all activities. How you can forget Parabram? Moment first decide it, otherwise you will not be able to receive the message of Lahiri Mahasaya. Then we are going to receive this message of Lahiri Mahasaya through somebody else, not from Holy Science. And they will teach like Eve. Therefore, the sixth Eve, six Eves, religious persons are there. They are going to tell who is Lahiri Mahasaya, what is Kriyayoga, who is Mahasaya Babaji, who is Kriya, who is Paramahansa Vrinda, who is Ram and Krishna, Buddha, Jesus, all. We are misguided because we are not accepting the first principle of Holy Science, that is the teaching of Mahasaya Baba given to Lahiri Mahasaya. Same teaching was transferred to Samik Tesagiri, same teaching is written here. The moment you are out of that, you will take a wrong decision. You will give incorrect advice. People do mistake all the times. When you are hearing, you are talking, using eyes to see, using tongue to taste, using nose to smell, using legs to walk, using arms to work, all the time mistakes will be there. That mistakes creates problem in the life. So again I am reminding you, Lahiri Mahasaya knowledge like sun. There may be 6 persons teaching on this planet. 6 are called great masters. Very big ashram, very big non-profit organization, very huge buildings, all facilities, but they are only religious Eves. Therefore, Paramahansa Yogananda, so that this teaching should not be distorted, he has written autobiography of Yogi. Mahasaya Baba gave all blessing how to complete that. Mahasaya Baba gave all blessing to Gyanatarik Tishagri how to complete Holy Science. And Mahasaya Baba gave all blessing to Paramahansa Yogananda how to translate it. Now we have it. Further, many persons have more greed in reading, and SRF lessons are there. Yoga lessons, Hindi, English are there. Read that. But remember that this practice, what you are doing, if you are dedicated in your practice, you will not be misguided by anything. Therefore, a spiritual son, a religious son, is only one, Lahiri Mahasaya. There are so many organizations, so many teachings, so many things that are done. They all are working like religious Eves. Religious Eves. Eves called deviate from you. They will say, oh, Lahiri Mahasaya also suffered. He was having the boil in back and he was just lying down. The bed was cut and he was passing stool and urine on the bed. My disciples used to serve it. They will create confusion. As they created confusion about Telanga Swami that he was having arthritis. You are not able to walk properly. All the false messages. They create confusion about Paramahansa Yogananda that he was sick. He was never sick. He took the all karmic burden of the disciples on him. Iktisagri old age appearance is taking karmic burden of the disciples on him. That is ever youth. Person who can resurrect, who can reappear, disappear, you should imagine that person fully able to live in any form, anywhere, anytime.
If I am reminding you, practice Kriya sincerely, do not be misguided by any books what you purchase and read it. Nowadays, everywhere is called Pranayama is very good, all right. Pranayama is very good. That is taught by Lahiri Master. Pranayama is the all in all. But what is Pranayama? Lahiri Master said, Kriyayoga practice is the Pranayama. Paramahansa Yogananda is telling this is the highest Pranayama. Yukteswar is telling, this is Yajna is called the Pranayama. But it in holy science, in procedure, first Sutta, Tapa, Swadhyaya, Brahmanidhanan Yajna. If we are confused, Pranayama means just closing the nose, doing velocity effect breathing, this breathing, that breathing, that breathing. That is Pranayama, you can say, like one wave of the ocean. Ocean is made up of countless waves. Infinite number of waves, they come together. They become ocean. But ocean is telling you, see, these waves has become me. In the same all breathing pattern, what is taught in the name of Pranayama, they teach in such a way that it creates problem. Little bit practice is all right. Therefore, I am going to tell you about Pranayama after this. अच्छी तरह से याद रखिए कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि वर्तमान द्वापर युग के जो अवतार हैं, योग अवतार लहरी महाशय, ये द्वापर युग प्रारंभ हुआ 1700 ईस्वी और ये 4100 ईस्वी तक चलेगा। लहरी महाशय की सारी शिक्षा वर्तमान द्वापर युग और अगले त्रेता और सतयुग तक ही मान्य है। तो लहरी महाशय की शिक्षा क्या है? वही शिक्षा तो है जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने होली साइंस में लिखा है। होली साइंस में क्या शिक्षा लिखा है? परब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। परब्रह्म ही आपके रूप में है। जिस पृथ्वी पर बैठे परब्रह्म में पृथ्वी के रूप में है। परब्रह्म पूरे ब्रह्मांड के रूप में है। जितनी रचनाएं हैं सब परब्रह्म सभी के रूप में है। परब्रह्म में कौन है? पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, तो सिर से पैर कंगली तक के स्वरूप परब्रह्म का साकार रूप है। तो हमारा कर्म क्या हुआ? परब्रह्म से लगातार जुड़े रहना। कैसे जुड़े रहेंगे? इसमें जो क्रियाएं होती है उससे जुड़ना। जैसे हम खड़े हैं, कुछ क्रियाएं हो रही हैं तभी हम खड़े हैं। फिर बैठ जाएंगे तो क्रियाएं होंगी, कुछ अलग होंगी। लेटने पर अलग होंगी। इसे जब लेटे हो, चाहे पीठे के बल, पेटे के बल या करवट ले रहे हैं या लेट करके बैठ रहे हो, फिर हम चल रहे हो, उठ रहे हो, हर समय सिर से पैर कंगली तक जो कुछ अनुभव होता है परब्रह्म ही की उपस्थिति है। इससे जुड़िए। जिससे आप जुड़ेंगे, यही तो अभ्यास है। बहुत महत्वपूर्ण इसका अभ्यास करना। इसको जुड़ते समय आपने सुख दुख कहा था, आपने इसकी निंदा कर दिया। इस तरह से हम उठे बैठे चले फिरे, एक सारी अनुभूतियां अच्छी लगी। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे पहले लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं तो धीरे धीरे लिखते हैं। अच्छी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो धीरे धीरे ही लिखेंगे, तेजी से नहीं लिखेंगे। अच्छी तरह से याद रखिए कि अगर लहरी महाशय शिक्षा है, युक्तेश्वर वही लिखा है, वही आप अभ्यास कर रहे हैं, तो इस तरह से आप चलिए, फिरिए, उठिए, बैठिए कि पैर के अंगुली से लेकर सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ती रहे। हमको तेजी से चलना है। चलिए, दौड़िए, जो मर्जी करिए। कि याद रखिए, ऐसा उठिए बैठिए कि आपको परिवर्तन अच्छे लगे। घर के लोग कमेंट करेंगे कि कैसे चल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। भूल जाइए सबको। इसीलिए तो आश्रम बनाने के यहाँ करके रहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से चलना है। ऐसा चलना है जैसे आर्मी वाले चलते हैं। अच्छी बात। दौड़िए, अच्छी तरह से दौड़िए। ठीक है, दौड़िए, लेकिन याद रखिए दौड़ते समय जो परिवर्तन हो भूलिए मत। उन परिवर्तनों को हम अनुभव करते हुए दौड़े, नहीं दौड़ने पर्पज खत्म। जैसे कोई चीज लिखना होता है, जब हमको सुंदर लिखते तो धीरे धीरे लिखते हैं। हम चाहते हैं कि अभी सुलेख लिखे तो केवल 10 ही लाइन लिख पा रहे हैं 1 घंटे में। हम चाहते 2 पेज लिख लें। लिखते लिखते एक दिन बहुत तेजी से लिख लेंगे 2 पेज। बनत बनत बन जाएगी। इस तरीके से अब देखिए, क्रिया के नाम पर, योग के नाम पर
अनेक प्रकार की चीजें सिखाई जा रही हैं, जिसको अगर आप मन लगा के अच्छी तरह सीख लीजिए तो दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगी। जैसे सर्कस में या जो गांव गांव में जो भैंस गाय लेकर के टहलते हैं, जिनको नट कहते हैं, जगह जगह पर जो दिखाते हैं, जो सर्कस वाली क्रियाएं दिखाते हैं, बॉडी को तोड़ मरोड़ करके अनेक तरह से व्यक्त करना, उसको ज्यादा करिए हम मेंटल हो जाएंगे। श्वास की क्रियाएं जो सिखाई जाती हैं थोड़ा बहुत तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा उसको करिए तो आपको मानसिक बीमारी आ जाएगी। तो प्राणायाम के बारे में लहरी महाशय क्या कहते हैं, वही प्राणायाम होरी साइंस में कैसे है, उसी प्राणायाम को परमहंस योगानंद कैसे अभ्यास कराया है, आपको तो हम समझाने जा रहे हैं, उसको आप समझिए। परब्रह्म, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, तो ये भी होगा परब्रह्म ही प्राण है, ठीक है। एक वैज्ञानिक की तरह परब्रह्म प्राण है ये मान करके चलिए। तो कोई बताते हैं कि श्वास ही प्राण है, तो श्वास की क्रियाएं जो करते हैं वो प्राणायाम हुआ। ये आंशिक सच है, पूरा नहीं। आप ज्यादा करके देखिए मानसिक बीमारी आ जाएगी। चलो अगर श्वास ही प्राण है तो जब आपको समाधि होती है तो श्वास तो गायब हो जाती है। जब प्राण ही गायब हो गया तो रहेंगे कैसे? प्राण के बिना रह ही नहीं सकते हैं, प्राण के बिना जीवन ही नहीं। न चल पाएंगे, न उठ पाएंगे, न बैठ पाएंगे, न बोल पाएंगे, न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे। चिंतन, लॉजिक सब प्राण के माध्यम से ही होता है। जो समाधि में श्वास गायब हो गई, इसका अर्थ हुआ कि प्राण गया। इसलिए समय आ गया है कि अब आप जिसको योग कहते हैं, योगा कहते हैं, उसको ठीक तरह से समझिए, उसमें गलती ना हो। I want to explain clearly, according to the principal philosophy of spirituality, Kriyayoga science, what is the prana? Prana, its parabram has become prana. The people are misguided. They think prana means breathing. Pranayama means breathing exercise. It is correct, but only one fraction. If pranayama is infinite dimension, what is breathing pattern practice is called one out of infinite. If you are doing vigorous breathing pattern as a start, you will get mental problem. In the same way, when you practice so-called gymnastic like asanas, you see in the circus how they practice asana. What is written in different books, what is the asana? That is not written in Maharishi Patanjali text. That is not written in Bhagavad Gita or Bible or Quran or teaching of Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, or Jnanatarik Teshwari, Lahiri Mahasaya, Paramhamsa, Yogananda. There is no teaching involved in that way. If that is the teaching, what we call the asana, if you do it little bit stretching, a short of stretching is all right. And try to practice too much, you will get heart attack. You will get blood pressure, you will get problem. If your asana is not that, what is taught generally? Practicing Kriya Yoga is called complete asana, complete pranayama, complete practicing yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, all 8. If you practice Kriya Yoga, it means you are practicing all 8 same time. Therefore, I would like to discuss technical name pranayama. What is pranayama? What pran means? Pran means parabram. Parabram means parabram has become all. Parabram has become your existence, my existence. Parabram has become this whole universe. And parabram has become pran. It means pran has become your existence, my existence. Pran is right arm, left arm. In the changes what we feel both arm, that is the pran. In lying, sitting, standing, working, resting,
all the position, all the time, whatever you feel, that is the prana. Pranayam, ayam means the structure and function of prana. That prana has become bones and muscles and skin and blood. Prana has become arteries and veins. Prana has become lymph and lymph nodes. Prana has become the whole thing, head to toes, neurons and everything. Prana has become brain and spinal cord and plexus, everything. That is the prana. What is the dimension of the prana? Prana is all in all, that is the dimension. How to practice pranayama? Feel head to toes, appreciate all changes, you are experiencing oneness with the prana. When you are sitting, feel your chest is expanding, contracting. This workshop is associated with something is going in and out through the nose or mouth. That's the real activity of prana. Ayam means all function, structure of the prana. Expansion, contraction of the chest or the heart or the lungs or anything. That's the workshop of the prana. Therefore, observe your breath, feel head to toes, all changes what you feel is called, we are practicing oneness with the prana. When you practice oneness with the prana more and more, you are going to experience dimensions of the prana. Dimensions means ayam, structure and function. Therefore, the Kriyayoga practice, what you do, the complete practice is called practicing pranayama. Regarding breathing pattern, when you see breath is going in, all right, you can inhale little longer. You can hold it, you can exhale it, hold it outside, but up to comfortable extent. But when you are inhaling, holding inside, exhaling, holding outside without feeling head and spine, head to toes, you may damage your lungs. Practice this inhalation, exhalation, holding in, holding out, the process of air in and out, all these things should be practiced when you feel head to toes. Feel head and spine, where is your bhumadhya? Then when you practice inhalation, holding inside, exhalation, holding outside, then you are not going to create any problem. But forceful inhalation, forceful holding inside, forceful exhalation, forceful holding inside, it creates mental problem. Then we cheat other persons. Therefore, you see, when you say that religious person starts cheating others, it's not their mistake. They have not learned proper what is the real science of yoga. Kriyayoga practice is called the complete practice of science of yoga. If they have not done it, what they are teaching wrong, it is not their mistake. It's because of the ascending Dwapara Yuga, it is not sufficient climate that everybody will follow Lahiri Master's teaching. Somebody teaching wrong, it is all right. Students are also doing mistake. Why a student is not able to connect themselves with the autobiography of Yogi, with the holy science, with the Lahiri Mahasaya, with Ikteswagiri, with Paramahansa Yogananda, it is their mistake also. If I am a wrong teacher and you are learning, then your mistake is also. Why you are learning from me? Just like as I am purchasing, I am selling the land, you are purchasing. I am cheater, I am selling the wrong land. My selling papers are not good, but you are purchasing also. You are also doing the same, then we are having, both are culprit. Therefore, do not blame the teachers who are teaching incorrect pranayama, incorrect science of yoga. Because we public, we do not want to write. I see many persons, yes, I have read autobiography with 30 years, and what you are learning? I do pranayama every day. What is this? It is not written in autobiography. You have read autobiography 30 years before, but you have never got interest to go to the Ranchi in Jharkhand, that is capital of Jharkhand. Their Yoga Math is there, founded by Paramahansa Yogananda in 1916. You never get desire to go there.
Never get desire to go. Dakshireshwar is also Yoga Math or self-fellowship, you say. Why by searching in Google you got here, that is no problem. Here's the same teaching, no difference at all. Therefore remember, if anybody say, oh, this book is very nice, I have read it 30 years before, that is good. But what you get out of that? Very little. Little means at least you know this book, you know something. That's got little. But complete thing is that when you follow the teaching of Kriya according to the holy science. Therefore, today pranayama means only this. What you practice recharging, that is pranayama. Meditation on movement is the pranayama. Meditation on breath, that is the pranayama. Meditation on holy vibration, closure, that is the pranayama. Altar of God practicing, that is the pranayama. Initiation steps is the highest pranayama. Among Kriyayoga, initiation is the top. But you cannot practice initiation until you become expert of recharging others. This is the brief message for today pranayama. I will explain further. प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण का मतलब जो श्वास कहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी सच्चाई है, ज्यादा नहीं। प्राण केवल श्वास ही नहीं, प्राण हाथ भी है। परब्रह्म प्राण के रूप में स्वयं प्रकट हो रहे हैं, तो प्राण के रूप में सिर से पैर कमर तक ये प्रकट हो रहा है। प्राण के रूप में पूरा जगत है ये। तो प्राण का आयाम क्या है? आयाम पाते स्ट्रक्चर फंक्शन, प्राण का गुण क्या है? तो प्राण की प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, उसकी रचना क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके लिए सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हैं। प्राण ही है जिस रूप में प्रकट हो रहा है। तो पैर के नाखून से लेकर के सिर तक एक एक जगह पर एकाग्रता बढ़ाते हैं। जितने तरह के परिवर्तनों की अनुभूति होती है, उससे जुड़ जाना ही प्राणायाम का अभ्यास है। इसे जो रिचार्जिंग करते हैं, जो श्वास में एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास करते हैं, भ्रूमध्य पर कान बंद करके जो सुनते हैं, सिर और रीढ़ का जो अभ्यास करते हैं ऑल्टर ऑफ गॉड के रूप में, दीक्षा वाली क्रिया, सब प्राणायाम है। फिर प्रश्न आता है कि जो सिखाया जाता है, नाक बंद करके श्वास खींचिए, दाहिनी नाक बाईं नाक आदि आदि, तेजी से श्वास लीजिए निकालिए, ये सब क्या है? थोड़ा बहुत तो ठीक है, ज्यादा करने पर मानसिक रोग हो जाता है। अगर बिल्कुल ठीक होता तो होली साइंस में दिया ना जाता, या बाइबल में, या श्रीमद् भगवद गीता में, या कबीर साहब की शिक्षा में, गुरु नानक देव जी के जपजी साहब में कहीं नहीं दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं नहीं है। किसने कौन सिखाया? जो भी सिखाया। मैंने कहा नहीं कि ज्ञान एक ही है, लाड़ी माँ से सूरज, उनसे पूछ क्यों नहीं मिल गई? कोई वहां जुगनू की तरह चमक रहा है, कहीं वहां चमक रहा है, कहीं वहां चमक रहा है, कहीं वहां चंद्रमा की तरह, कहीं जुगनू की तरह। इस तरह से हजारों की संख्या में पथ प्रदर्शक हो जाते हैं। फिर ये जो आता है कि ये क्या है, जो सीना फूलता और पिचकता है, ये फेफड़ा कंप्रेस होता है, फैलता है, ऐसा करने से नाक से कुछ आता और जाता, ये क्या है? ये भी प्राण है। तो जो इसका अभ्यास कराते हैं, खूब तेजी से श्वास लेते हैं, खूब रोकते हैं, गिनते गिनते हैं 100 200 300, या पानी में डूबते हैं, जाते हैं, नीचे तलाटी में कुछ खोद के आते, तब तक श्वास रोके रहते हैं, ये क्या है? श्वास अंदर जोर से लेना, अंदर रोकना, बाहर निकालना, बाहर रोकना, ये सब क्या है? ठीक है, उतना अभ्यास करिए जितने अभ्यास में आप सिर से पैर की उंगली तक अनुभव कर सके। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बनाए हुए आप श्वास अंदर लेते हैं, रोकते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर रोकते हैं। इसका कुछ अभ्यास कर सकते हैं, 4 4 10 बार 20 बार तक, इससे ज्यादा नहीं। जो हम सेवा करते हुए जो श्वास लेते, वही है श्वास की क्रिया। ठीक, सेवा करते समय श्वास प्रश्वास कैसी चलती है?
अपने पैरों में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो कैसा सांस लेते हैं? अपने हाथ में, पीठ में, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, इस पर जब एकाग्र होते हैं तो किस तरह से ये श्वास चलती है? वही है ठीक ठीक क्रिया। तभी अगर हम कुछ बार अंदर सांस लिए, माने 10 गिनती तक लिए, 10 गिनती तक रोके, 10 गिनती तक बाहर निकाले, 10 गिनती में सांस बाहर रोके, ठीक है। 10 से 20 गिनती गए, कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रेसलेस हो, ये करते समय पूरी शरीर की अनुभूति करते रहिए। सिर और रीढ़ कहाँ है, भूमध्य कहाँ है, तब क्रिया गलत नहीं होगी। और बहुत ज्यादा करेगा तो नुकसान करेगा। तो निष्कर्ष क्या रहा? क्रिया योग की जितनी प्रविधियां करते हैं वो सब प्राणायाम। इसके बारे में फिर आपको हम बताएंगे विस्तार से। आज यहीं तक। आइए हम प्राण की अनुभूति करते हैं 2 बार में श्वास प्रश्वास का अभ्यास के साथ। पैर के नाखून से लेकर के सिर तक सब जगह एकाग्रता बढ़ा करके जो अनुभव करते हैं, ये प्राण की उपस्थिति है, प्राण की अनुभूति है। We are practicing double breathing, is touching relaxation. Through this, whatever we experience is presence of prana in different dimension. Let us bow down to our devotion in Kriyayoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति प्रकट करें। क्रिया योग का अभ्यास ही सर्वोच्च और पूर्ण प्राणायाम है, परफेक्ट प्राणायाम है। प्रैक्टिस हम क्रिया का इसका प्रैक्टिसिंग परफेक्ट कंप्लीट प्राणायाम। नाउ वी विल सिट, बैठेंगे, आंखें खोलें, ओपन आइज।